Hello all my dear students, I welcome you once again to your maths online class. Yes students, in my last lecture I have explained you question number 2 of exercise 4.2 and along with it I have given you some rules of the signs of integer and I have told you to please remember all those rules of the signs of integers as all those rules are important for you all. I hope you must have remembered all those rules. And today we will move on to the next exercise, that is exercise 4.3, and for exercise 4.3 the same rules are important for you all. Okay, so remember those rules. According to those rules only we will be solving this exercise also. So without wasting the time, let's begin today's topic, that is exercise 4.3, question number 1 and question number 2. Okay, yes, so the first question of exercise 4.3 is subtract. Use a number line only as a check. You have to subtract the integers which are given here and then you can use the number line for checking. But here I suggest you not to use the number line. You can do it without using the number line. Fine, as we have done in exercise 4.2 question number 2, the same way we will be doing here with subtraction. So just pay attention in question number first A part. So your A part is 8 minus 3. So this is your A part. How to solve it? Just see. First of all you will put this 8 as it is, as I have told you. Firstly we open the bracket. सबसे पहले आपको bracket को open करना है and see the rules. Minus outside the bracket and minus inside the bracket. Here the first rule. Whenever minus sign is inside the bracket and minus outside the bracket, then it becomes plus in the next step. So ये दोनों sign solve होके next step में हो जाएंगे 3. And then it's simple now. No sign is there before 8. That means plus and it is also plus. So plus means plus. So here simply you have to do addition, and when both are plus then the final answer will also be of plus, but here we will not put positive sign because without positive sign also it is understood that the answer is positive only. So this is your A part. Your B part is minus 5 minus 2. So this is your B part. See how to solve it. First of all you will put this minus 5 as it is. Now we have to open this bracket again. Minus outside the bracket and minus inside the bracket. So it will be plus 2. Now the next step will be minus plus. So see the rule, minus plus is minus. Okay, so basically you just remember the rule and you will understand that what you have to do. Minus plus minus, that means we have to subtract these two numbers. So subtract 2 from 5. 5 में से आप 2 को subtract करिए. After subtracting what you will get? You will get 3. Now you have to see which integer is greater. कौन सा integer greater है? So number 5 is greater. Before 5 which sign is there? Minus sign. So here we will put minus sign before 3 in the answer. So this will be your answer. Okay. Now C part. So C part is 14 minus 19. Here there is no bracket in the question. So before 14 no sign, that means plus and it is minus. So plus minus is equals to minus. So we have to subtract these two number. So subtract 14 from 19. 19 में से आप 14 को subtract करिए, आपको आंसर मिलेगा क्या? आपको आंसर मिलेगा 5. Now which integer is greater? Yes, 19 is greater, and before 19 which sign is there? Minus sign. So in answer also minus sign will come. So minus 5 will be the answer of C part. Okay, let's move on to the next part, that is part D. So in part D it is 20 minus 27. Okay, so 20 is with no sign, that means plus, and 27 is with minus sign. So plus minus is equals to minus. So subtract 27 and 20. So you will get 7. जब आप 27 में से 20 को subtract करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7, and the greater integer from these two is 27, and before 27 is minus sign. So in answer also we will put minus sign. So this will be the answer of D part. Let's move on to E part, and it is minus 6 minus 6. This is your part E. So here we are having bracket in this part. So we will open the bracket. First of all minus 6 will come.
Now open the bracket. Minus outside the bracket, minus inside the bracket. The very first rule. So it will become plus. Okay. And then you will write 6. Now what we have to do? Minus plus. Minus plus means minus. तो यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस करेंगे. जब आप 6 और 6 को माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, नो साइन कम्स विथ 0, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. सो हियर ओनली 0 विल बी द आंसर. नेक्स्ट पार्ट F. सो पार्ट F इज 7 minus 4. Again see, bracket is there, minus outside, minus inside. So again it will become plus. So 7 plus 4. Now no sign is with 7, that means plus. So plus 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 is plus. So 7 plus 4 will be 11. And when both the sign are of plus, then answer will also be with plus, positive sign. But we will not put positive because it's understood if no sign, then it is positive only. Then the next part is 0 minus 9. This is your next part. Start solving it. It is having bracket, minus outside, minus inside. So it will be plus. So 0 plus 9 will give you 9. Okay. So it is plus only because the greater integer is 9 and before 9 plus sign is there. Okay. So this was your part G. Let's move on to next part. That is part H. So in H part it is minus 9 minus 4. This is your part H. Start solving it. Minus 9 will come as it is. Then open the bracket. Minus outside the bracket, minus inside the bracket. So minus will give you plus. So 9 minus 9 plus 4. Now in next step, just see the sign minus plus. हर स्टेप के बाद में पहले आप साइन देखिए, रूल देखिए और उस अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. सो माइनस प्लस इज माइनस, दैट मीन्स आपको इन दोनों को माइनस करना है. 9 में से 4 को माइनस करिए, क्या आएगा आपके पास में 5. ओके. देन द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर इंटीजर इज 9 और 9 के पहले कौन सा साइन है? माइनस. सो हियर इन आंसर ऑल्सो वी विल पुट माइनस साइन. ओके. नाउ आफ्टर H it will be minus 25 and minus 15. Okay. Now see, again we have to open the bracket here. So minus 25, minus outside the bracket, minus inside the bracket. So it will be plus 15. Okay. Now minus plus. So minus plus is minus. So you have to subtract here. 25 में से आप 15 को subtract करिए. After subtracting you will get number 10. Now which number is greater? 25 is greater and before 25 is minus sign. So we will also put here minus sign. So this minus 10 is your answer. Okay. Now let's move on to the next part, that is part J. Minus 72 and minus 9. Yes. In this type of question students mostly do mistake. Okay. So please pay attention and don't do that mistake. Minus, this rule. माइनस इज प्लस बट साइन रिमेन्स माइनस. कभी भी माइनस इस तरीके से अगर आएंगे, दो इंटीजर्स हैं, दोनों के साथ में माइनस का साइन है. सो इस केस में माइनस को प्लस किया जाएगा बट उसका साइन माइनस का आएगा. सो 72 एंड 9 को जब आप ऐड करोगे, हमें करना इसको ऐड है लेकिन फाइनल आंसर के आगे माइनस का साइन लगेगा. सो व्हेन यू विल ऐड इट यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट नंबर 81 एंड minus 81 will come here. Okay, understood? Now K part. So in K part it is minus 42 and minus 26. Again the same as it was there in J part, both are with minus sign. So minus again is plus but sign will be of minus. So आपको करना है इसको ऐड, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसके आगे माइनस का साइन आएगा. सो एड इट. 6 plus 2 is equals to 8 and 4 plus 2 is equals to 6. So हमने ऐड कर दिया बट साइन कौन सा आएगा इसके साथ में? साइन आएगा इसके साथ में माइनस का. So minus 68 is the answer of K part. Okay. Now after K, last part is there that I am doing here. L part, it is minus 50 minus 50. So this is your
last part of question number first. Okay, so open the bracket. How you will open it? Minus 50. Here you can see minus outside the bracket and minus inside the bracket. So one sign will come, that is plus 50. Okay, now here see the sign here. Now it is minus and plus. One sign is minus and other sign is plus. So minus plus is minus. So 50 minus 50 will give you what? It will give you, yes, it will give you 0 answer, because no sign comes with 0. So it will only be the answer. So these are all the parts of question number first, which you can do easily if you remember these rules. So I request you to please remember these rules and keep on repeating it when you are solving these questions, and try to solve all these questions by yourself. Just watch it, that how to solve it, and then I request you to please solve it yourself. Don't copy the work which I am sending you, okay? Because if you will do it yourself, you will become perfect in solving this particular topic. Fine, students? Yes, students, let us now move on to question number 2. So question number 2 is write an expression for each of the following using integers and solve. Firstly, we have to read this problem sum, and then we have to write the expression for it. Expression means the way in which the questions were given in question number 1. In that way, firstly we have to arrange the integer and then we have to solve it. Okay, so let's begin. The first question is, Mr. Bose asked his daughter Tara to collect eucalyptus seed. Mr. Bose ने अपनी डॉटर तारा को यूकेलिप्टस प्लांट के कुछ सीड्स कलेक्ट करने के लिए कहा. Tara collected 357 seeds. So Tara has collected total 357 seeds, but Mr. Bose wanted her to collect 600 seeds. Mr. Bose चाहते थे कि वो 600 seeds collect करे, okay? But she has collected only 357 seeds. So how many seeds Tara would have to collect now? तो अभी तारा को और कितने seeds collect करने हैं? Okay? क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया है. मिस्टर बोस ने यूकेलिप्टस सीड्स कलेक्ट करने के लिए कहा था और उन्होंने टोटल 600 सीड्स कलेक्ट करने के लिए कहा था, बट तारा ने 357 सीड्स ही कलेक्ट किए हैं. तो अभी तारा को और कितने सीड्स कलेक्ट करने बाकी हैं? क्या करेंगे हम इसके लिए? यस, वी हैव टू सबट्रैक्ट. अगर वो 357 कलेक्ट कर चुकी है, ओके, तो उसको और कितने कलेक्ट करने हैं कि उसके टोटल सीड 600 हो जाए? तो ऑब्वियसली जब आप 600 में से 357 को माइनस करोगे तभी वैल्यू फाइंड आउट होगी कि उसको और कितने कलेक्ट करने हैं. सो इसके लिए आप क्या करोगे? इट इज़ आस्क्ड टू राइट द एक्सप्रेशन एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट. सो फर्स्टली यू विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट. एक्सप्रेशन क्या होगा? टोटल उसको कितने कलेक्ट करने थे? उसको कलेक्ट करने थे 600. ओके, सो फ्रॉम 600 शी हैज़ कलेक्टेड हाउ मैनी? शी हैज़ कलेक्टेड 357. तो अभी और उसको कितने कलेक्ट करने हैं? जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन. लाइक दिस यू विल अरेंज द इंटीजर. सो 600 इज विथ प्लस साइन एंड 357 इज विथ माइनस साइन. Then we have to solve it in next step. So how you will solve it? It is plus, it is minus. So you have to subtract it. So how you will subtract? Write down 600 and then write down 357 and subtract it. So it will become 10, 9 and 5. So 10 minus 7 will give you 3. 9 minus 5 will give you 4 and it will become 5. So 5 minus 3 will give you 243. So here you will write 243 and the greater integer is 600. Before 600 which sign is there? No sign, that means positive. So 243. So these many seeds are still to be collected by Tara. तारा को अभी 243 seeds और collect करने हैं ताकि वो कुल मिला के 600 seeds को collect कर ले. Okay students, understood एक बात? Yes students, let us now move on to B part. It is Raju takes a right turn and walks 95 steps to reach his house. राजू ने राइट टर्न लिया और 95 स्टेप्स वॉक किए और वो अपने घर तक पहुंच गया.
वन डे ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, एक दिन उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 32 स्टेप्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, और पहले वो राइट हैंड साइड में गया था अपने घर तक पहुंचने के लिए, फिर उसने एक दिन ऑपोजिट टर्न लिया। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मीन्स लेफ्ट साइड में उसने टर्न लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में 32 स्टेप्स उसने वॉक किए। हाउ मैनी स्टेप्स ही हैज़ टू वॉक बैक टू रीच हिज हाउस, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा चुका है तो अब उसे वापस कितने स्टेप्स वॉक करने पड़ेंगे कि वो अपने घर तक पहुंच पाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक राइट direction and walked 95 steps, and then he took opposite direction left hand side and he walks 32 steps. So now we have to tell how much steps he has to walk to move to his house. See, राजू है जैसे यहाँ पर और यहाँ उसका घर है, अब उसने राइट साइड के अंदर मूव किया था, कितने स्टेप्स? ही मूव्ड 95 स्टेप्स, वो 95 स्टेप्स मूव किया था, राइट साइड में गया, दैट मीन्स उसको आप डिनोट करोगे पॉजिटिव साइन से। ओके, देन जब वो एक दिन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट साइड में आया, तो लेफ्ट साइड में आने के लिए साइन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, -32 स्टेप्स, वो पीछे की तरफ आ गया। फाइन, नाउ ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू हिज हाउस, कितने स्टेप्स उसको चलने पड़ेंगे कि वो अपने घर तक रीच हो जाए। सो सी, the expression here will be, it will be total जो उसको स्टेप्स चलने हैं अपने घर तक, that will be 95 steps। ओके, अब क्या किया उसने, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। फाइन, सो माइनस होगा, पहले वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है और कितने स्टेप्स गया है वो, -32। फाइन, one minus sign will come outside the bracket and one minus sign will come इनसाइड द ब्रैकेट। 95 स्टेप्स, तो अगर वो डायरेक्ट चलता राइट हैंड साइड में तो 95 स्टेप्स लगते उसके, बट अब क्या हुआ, पहले तो उसको ये -32, ये 32 स्टेप्स कम करने पड़ेंगे एंड देन ही हैज़ टू गो टू हिज हाउस, सो -32। नाउ हाउ यू विल सॉल्व इट? सी, फॉर सॉल्विंग इट यू विल ओपन द ब्रैकेट, माइनस आउटसाइड एंड माइनस इनसाइड, माइनस आउटसाइड माइनस इनसाइड, so it will become +32. Okay, now see, when you will add it, what will come? 5 plus 2 is 7 and 9 plus 3 is 12. So 127 steps. पहले तो ये 32 steps उसको कवर करने पड़ेंगे जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया है, पहले ये 32 steps कवर होंगे एंड देन उसके बाद में उसको 95 steps और वॉक करना पड़ेगा। सो इट विल बी 95 + 32, दैट मीन्स 127 स्टेप्स उसे वॉक करना पड़ेगा अपने घर तक पहुंचने के लिए, बिकॉज ही हैज़ टेकन 32 steps towards the opposite direction. So it will be, remember, minus outside the bracket and then minus because he has taken the opposite direction. So this minus sign is of opposite direction, -32, which will become plus in the next step. Fine? Yes. Now the next question is C part. On an early winter morning, temperature in Boston fell to -13 degree Fahrenheit. एक अर्ली विंटर मॉर्निंग में बॉस्टन इज़ अ प्लेस जहाँ पर जो टेम्परेचर था वो -13 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉल हो चुका है, दैट मीन्स नीचे गिर चुका है टेम्परेचर। हाउएवर इट रोज मीन्स इंक्रीज हुआ टू 48 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द डे टाइम। दिन के समय वो जो टेम्परेचर था फिर रोज हो गया, दैट मीन्स बढ़ गया 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हाउ मच वॉज द शिफ्ट इन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कितना शिफ्ट हुआ है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। रिमेंबर हियर फेल मीन्स माइनस, दैट मीन्स टेम्परेचर नीचे गिरा है। अगर टेम्परेचर फेल हुआ है तो इट विल बी डिनोटेड विथ नेगेटिव साइन, एंड हियर it is written that the in daytime the temperature rose means it increased, so agar increase hua hai so it will be denoted with positive sign. Fine, fell will be denoted with negative sign and rose will be denoted with positive sign. So now we have to write the expression here firstly for the given question. So here the temperature fall down firstly, no, so it will be shown with minus sign. Okay, कितना fall हुआ है, -13 degree Fahrenheit, so it will come in bracket 13 degree Fahrenheit. Okay,
this will come in bracket. Now how much difference is there? अब क्या हुआ है आगे? प्लस हुआ है, रोज हुआ है टेम्परेचर, एंड इट रोज हाउ मच? 48 डिग्री Fahrenheit. So you will put plus sign and then 48 degree Fahrenheit will come. So this will be the expression for C part. Now how to solve it? See, first of all you can see the bracket. So open the bracket, minus outside and minus inside. So it will become plus 13 degree Fahrenheit plus 48 degree Fahrenheit. Okay, now both are with plus sign. So it's simple, we have to add it only. Add 8 plus 3 is 11, 4 plus 1 is 5 plus 1 61 degree Fahrenheit. And when both are with plus sign, that means the answer will also come with plus sign. So how much shift was there in the temperature? There was total 61 degree Fahrenheit shift in the temperature. Okay students, got it? Okay students, now the last part of the exercise of question number 2, it is a courier man covers 35 kilometer distance to deliver a product to the customer. एक courier man था जिसने 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है अपने कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए. He travels 28 किलोमीटर by bus. अब now the total distance was 35 kilometer. Out of that distance he has traveled 28 किलोमीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय बाईसाइकिल. ओके, 28 किलोमीटर तो उसने बस से ट्रैवल करा और जो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस था वो उसने बाईसाइकिल से ट्रैवल करा. सो व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर राइडिंग बाईसाइकिल? सो इट इज़ वेरी सिंपल. उसने बाईसाइकिल से कितना डिस्टेंस कवर किया? सो दिस यू कैन फाइंड इट आउट बाय डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन. टोटल 35 किलोमीटर का डिस्टेंस था उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कस्टमर तक, जिसमें से 28 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो उसने बस से कवर कर लिया. नाउ वी हैव टू टेल बाईसाइकिल से उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है. सो फॉर दिस एक्सप्रेशन विल बी व्हाट? टोटल डिस्टेंस माइनस कवर्ड डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 35 किलोमीटर, और उसमें से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बस से? 28 किलोमीटर ही हैज़ कवर्ड विथ बस. नाउ वी हैव टू solve it. So for solving you have to subtract to find it out that how much distance he has covered by bicycle. So when you will subtract 28 from 35 you will get 7 kilometer. So this will be the distance which he will cover by bicycle to deliver the product to his customer. Okay students? So that was all about question number 1 and question number 2 of exercise 4.2 chapter number 4. I hope all these questions are very much clear to you students, and I request you to please try to solve all these questions by yourself. For any doubt you can leave your comments in the comment section. I will try to solve your doubts in my next lecture. Fine students. So that's all for today. Meet you all in next online class. Till then, take care of yourself. Thank you students.